So we've already learned a bit about friction. Friction क्या होती है? It's an opposing force and it resists motion. If you have a car और वो forward move कर रही है, तो friction उस motion को, उस forward motion को रोकने की कोशिश करती है. Okay? So it acts backward. And friction can be present in different places. Okay? Whenever you have two surfaces in contact, friction is present. जैसे कि आपके पास ये टायर और रोड contact में है and they're rubbing against each other, that's friction. Even in the engine, um, like the parts of the engine, they're rubbing against each other, वो contact में है तो engine में भी friction है. और friction से क्या होता है? Wear and tear. Friction causes things to get exhausted and eventually get old. That's why you have to replace them. So, friction kya hai? It's a force that works in opposition to the motion of the object. And remember that it slows down the motion of the object. I remember आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर there is you throw a ball and it doesn't hit a wall, तो वो क्यों रुक जाता है? And the reason I told you that day as well, and I'll repeat it, is friction. Okay? When you roll a ball on the ground, तो आपने जो force forward apply की होती है, जो बॉल और फ्लोर के दरमियान जो कांटेक्ट है उससे क्या होता है देयर इज एन ऑपोजिट फोर्स फ्रिक्शन वो उसको स्लो डाउन करती है एंड इवेंचुअली द बॉल कम्स टू अ स्टॉप जब भी फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है तो वी हैव एनर्जी ट्रांसफर एंड that transfer of energy is in the form of heat. Okay, I'll write that point and I'll explain it more. Energy transferred in the form of heat. So you guys can try it out right now. Rub your hands together and you will see that they get warm. That's like a proof of what we've just written. जब भी आपकी दो surfaces contact में होती हैं, okay, there's friction present firstly, और friction से क्या होता है? Heat transfer होती है, okay? इससे क्या होता है? Object का temperature raise हो जाता है. So that is why your hands get warm. So there's one more thing जो हम energy के section में पढ़ेंगे, but I want you guys to remember कि energy transferred is equal to the work done. Okay, I'll just write that statement for now. आपको इसको बिल्कुल सही से समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब introduce करवा रही हूँ because probably the next section will be energy. So energy transferred is equal to the work done. It can be by a system or on a system. Don't worry about that. I will explain that when we cover the section of energy. बस आपको भी ये बताना चाहिए कि जहाँ भी एनर्जी प्रेजेंट है वहां वर्क हो रहा है जैसे कि सुबह when you have breakfast आपको एनर्जी मिलती है और फिर आप अपने दिन के काम शुरू करते हैं राइट जब वो जो आप फूड से आपको एनर्जी मिलती है दैट्स योर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी और फिर जब आप बाकी के काम करते हैं वो डिफरेंट वो एनर्जी जो आपको फूड से मिली थी वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है So the point here is कि energy is transferred in the form of heat और ये heat क्या करती है? It raises temperature of a body. So this heat raises temperature of
object and its surroundings. मैम, Yes. आपको कहने का मतलब है Sorry, हाँ, can you हमें repeat फूड that? से ही एनर्जी मिलती है। No. Um, okay, होता ये है कि energy, there's like a law of conservation of energy कि energy आप create नहीं कर सकते और destroy नहीं कर सकते। Energy transfer होती है एक form से दूसरी form में। तो जो आप food, like the food that you intake, उसमें chemical energy होती है। और आपकी body different chemical reactions करती है उस chemical energy को heat में convert करने के लिए। Okay? जैसे there's this one process happening in your body, आपने शायद biology ली थी, so you might know that, respiration. Respiration में क्या होता है? The cells, they use glucose or sugar to make energy. Hold on, was that right? Glucose and water to make carbon dioxide and water. Glucose and oxygen, yeah. So our body takes, it's been a while since I took biology, um, so our bodies, they use glucose, जो आपने food खाया होता है, chemical energy, plus oxygen, और क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उसके साथ साथ एनर्जी भी बनती है। ओके, सो द बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड इनटू एनर्जी, और वो एनर्जी फिर डिफरेंट टाइप्स के चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि इफ योर बॉडी नीड्स टू बी वार्म, तो वो एनर्जी, जो एनर्जी है, वो किस में बदल जाती है? हीट में, थर्मल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किस में बदलती है? थर्मल एनर्जी में और हीट एनर्जी में। ओके, सो द फूड इटसेल्फ हैज केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी में बदलती है। अगर आप, इफ यूर कोल्ड, योर बॉडी विल कन्वर्ट दैट टू थर्मल एनर्जी जो कि हीट है। और अगर आप भागना शुरू कर देते हैं, लाइक इफ यूर मूविंग, तो आपकी बॉडी ने वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी है? काइनेटिक एनर्जी में। ओके, so there's a lot of conversions going on. Is that clear? यस मैम। Okay. Now, there's two things about friction that we need to know. Friction in solids and friction in fluids. Solids क्या होते हैं? We know what solids are. जिनके particles are closely packed together, like anything on your desk, probably your table, your notebook, a lot of that stuff. So, friction in solids. Let's discuss that first. Solids में friction is due to the imperfections in the surfaces of the objects moving over one another. I'll write that down first. Caused by imperfections in the surfaces of objects moving over one another. We can't always see it, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको गौर से देखें, even like I think you guys can see it as well. तो हर चीज के surface पर कोई ना कोई imperfections होती हैं. For example, let's say this is a table and this is a box resting on the table like that. Okay, अगर I zoomed this part, let's say zoomed into this part, you guys will notice okay, the table also has some sort of groups, and so does the box. Okay,
If you zoom it, you will see it's not going to be that obvious, but I'm trying to deliver the idea here. Okay, there are certain grooves or imperfections in these surfaces. और जब वो when they slide past each other, तो ये grooves they maybe fit into each other and they try to stop the object from moving. Is that clear? यस मैम। मैम फ्रिक्शन के अंदर हीट एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन। Yes, that's right. ओके Okay. मैम Yes. तो ये फ्रिक्शन कॉज करता है, Sorry. ये फ्रिक्शन कॉज करता है, ये friction क्या? कॉज करता है। हाँ जी. Friction is like an opposition to motion. You can imagine this like what do I give an example? Acha, have you guys seen those needles kind of things? I don't know what they're called. जो roads पे बनी होती हैं कि कार सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो opposite डायरेक्शन में जाएं तो वो the needles burst the tires. यस मैम। So what happens is that those needles, when the car comes, they bump into it, right? And the car can't move over them. It's not a good example. Let's just forget about it. It's a completely different thing. So here, the concept is just that the grooves, they get stuck into each other and they stop the car or this whatever object is from moving. इसलिए roads की जो surfaces होती हैं वो बहुत rough होती हैं. उन पे like potholes नहीं होने चाहिए वैसे, लेकिन they're very rough और tires भी rough होते हैं. You might have seen treads on the tire, like patterns on the tires. Tires पे patterns बने होते हैं ताकि उनकी friction बढ़े. Okay, वो ज़्यादा rough हो और वो उनकी grip बेहतर हो. Is that clear? यस मैम। So the मैम point- अगर कोई बिल्कुल यस Mhm. मैम। मैम अगर कोई बिल्कुल स्मूथ सरफेस है और उस पे रबिंग हो फिर फ्रिक्शन कॉज नहीं होगी? बहुत कम होगी. जितनी सरफेस स्मूथ होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन कम होगी. दैट इज व्हाई जब क्या कहते हैं like when it's raining, when the roads are wet, so there is less friction and more chances of a car sliding. Okay, यस मैम। I think I should note this point as well, that smoother the surface, smoother the surface. For example, अगर rain हो रही है, that has less friction. All right. Now let's talk about fluids. Fluids में we have fluids में कौन कौन से states of matter आते हैं? लिक्विड्स, गैस। That's right. Liquids and gases. Okay. Now fluids are different from solids. क्यों? क्योंकि solids के particles fixed होते हैं, लेकिन fluid particles can move around. Sorry. So fluids में जो friction है उसको हम drag कहते हैं. Drag force. Whenever you have a fluid, whether it's air or water, जब भी कोई object in fluids में move करता है, it's moving past these particles in liquids and gases. What the object is doing is that it's moving through these liquids and gases and colliding with the particles. जैसे कि if you have a boat, how does it like a boat, and it's moving like a boat and it's moving in water, so the water molecules are hitting the boat, right? And the boat is like what is it called? Not
cutting exactly, but it's like moving through the water. तो वो पानी को दूसरी साइड्स पे पुश करके दरमियान से गुजर रही है. So इस टाइप ऑफ फोर्स को जहां पर ये अब जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो आपके इस बोट को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लिक्विड पार्टिकल्स मोशन को अपोज कर रहे हैं, राइट? सो जो भी टाइप ऑफ फोर्स हो दैट अपोजेस मोशन, दैट इज फ्रिक्शन. ओके, यहाँ पे आपको पॉइंट लिख लेते हैं कि particles मैम bump into the, yes, ड्रैग फोर्स भी फ्रिक्शन है। yes, it's friction. एक और नाम है इसका, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस एयर की फ्रिक्शन का नाम है, राइट? Liquid and gas particles bump into the object moving.